Are you the one who's still struggling to understand the English grammar for acing your IELTS? So this video is going to give you a result. Don't forget to like, comment, share and subscribe to help your friends. So guys, क्या आप भी उनमें से एक हैं जिनको अभी भी ग्रामर समझने में प्रॉब्लम है? Are you the one जिसको अभी भी ये क्लियर नहीं होता है कि ग्रामर में कौन कौन से रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस आपको यूज करने हैं? So before we begin, the most important part to be understood is that आपको ये पता होना चाहिए what exactly grammar is, right? So grammar is basically to control two elements of the English language. First is the expression speaker or writer is writing into, and second happens to be the time zone. So अगर हम tenses की बात करें, so tenses basically tells you about the complete time zone gap. So अगर हम present की बात करें, it is talking about now. अगर हम past की बात करें, it is talking about something which is already over. And अगर हम future की बात करें, so future talks about something which is yet to come, right? अब बात करते हैं कि grammatical expressions को आप कैसे control कर सकते हैं. So make sure now you have understood that grammar is majorly about the time zones कि कब वो particular incident हुआ है. The second step comes in wherein you should be knowing that which is the right expression to be used, right? So let's take an example of two expressions which most of the students are confused with, that is may and might. So where to use may and where to use might? मे का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें दोनों ही वर्ड्स मे या माइट दोनों ही वर्ड्स तब यूज किए जाते हैं जब आप किसी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं. वेयर आर द चांसेस ऑफ गेटिंग द पर्टिकुलर थिंग इज हायर, राइट? अब वो कितना पॉसिबल है, दिस इज नॉट श्योर. सो वहां पे यूज आता है आपके मे एंड माइट का. मे इज गोइंग टू बी यूज जहां पे उस पर्टिकुलर एक्शन के कंप्लीशन की पॉसिबिलिटी जो है वो कंपेरेटिवली ज्यादा है, राइट? सो यू कैन से आउट ऑफ 100% इट इज रेंजिंग अप टू 70 to 80%. सो अगर आपको दिख रहा है कि कोई पर्टिकुलर एक्शन है जिसको होने की पॉसिबिलिटी इज गोइंग अप टू लेट्स से 80%, मोस्ट लाइकली होगा ही होगा. फॉर द एग्जाम्पल, लेट्स सपोज इफ यू गो आउटसाइड, इफ यू सी दैट इट इज सो क्लाउडी, द ब्लैक क्लाउड्स आर देयर, सो एंड देयर इज नो विंड, so possibility of getting the rain is on the higher side, so it may rain. However, अगर आप might का use करते हैं, so might can be used in the spaces and instances like wherein the possibility of getting that work done is comparatively lesser, right? So for example, you can say you're not sure whether you would be joining your friends for the movie in the evening. You say, if someone is inviting you, you may say I might come. That means I myself is hinting that the possibility of me joining you guys for the movie is less, right? So आज हमने दो expressions cover किए हैं, may and might. Follow our channel, subscribe our channel, and we'll keep on giving you these easy tips to improve your English.